यस, हमारे साथ स्वाति जी भी आ गए। हाय स्वाति। वेलकम स्वाति, वेलकम। अच्छा लगा आपको देख के बहुत लॉन्ग टाइम के टाइम बाद। अनुराधा से फोन किया ना तो मुझे याद है सैटरडे हाँ, So hello and welcome. So today is 2nd of October, Gandhi Jayanti. I welcome you all. So I wanted to share a bit about Pitri Paksh. Um, so what may be the importance or what could be the importance? So these are my thoughts that Pitri Paksh or the way in US there is an um, I forget the name, but it is uh, when they remember the ancestors day or old man day or ghost day, it is called, I think. So many cultures have this tradition that we respect or we acknowledge our ancestors. Mm. Also, I've heard in while I was staying in US that on certain days they put an extra plate um, for the people who have passed away in the family, just to acknowledge them. Okay, they like we invite them and that they are seated, extra plate on the dinner table. And here in India, of course, as we know, everybody knows that during this fortnight, usually falls in September, October, during these months, the Shraddh, 15 days. And as per the day of the fortnight when our ancestor passed away, we offer food to many people, not only people in our family, but also to a bird, to a cow, to a dog, and ants, and that is how. And also some people, if they give um, dry food to the temple. So what I have understood that there are two meanings or two social meanings for it. First of all, that we donate a certain part of our income to people or to temples which are doing social work, and the other is that we are acknowledging, we are remembering our ancestors. And why is it important to remember our ancestors? It is that everybody, like me, then my two parents, then their four parents, then their 16 parents, all of that, if we go to 10 generations, it will be like 2000 people. And there is that exact formula given in Vishnu Puran that we are the sigma, like we are the summation of so many of our ancestors. Like I got my DNA from my mother and my father. Then my mother got her DNA from my nani and nanaji. My father got from my dadi and dadaji. So in that, those four people and then 2000 people, we acknowledge those 2000 people there. So that is why that Pitripaksh is celebrated, and we um, remember our ancestors. So that is the logic I know about. So welcome Shweta. हाय अनुराधा। आई एम सॉरी आई एम लेट बिकॉज Are इंटरनेट Baba, इशू no हो रहा था। sorry, no sorry, no thank you. That's the famous dialogue. So I started on my own and I was speaking about Pitri Paksh. So to यस, summarize, just for 5 minutes, about. So what I feel that why Pitri Paksh is that in every tradition, I have lived in US also. There is one day or like in our fortnight that we remember our ancestors, and why it is important is that you know like we I got my DNA from my mother and father. My mother got my her DNA from her mother and father. So actually we are a summation of, say, in 10 generations. If we go and look at the genetics, we are a summation of our 10 generations. That is what, like, even in scientifically it is proven that we are not only just like our, like we just got born, but so many यस, ancestors have experienced
and through their experience or through their lineage, the word is lineage, that I come here in their lineage, and that's why this Pitri Paksh or the ghost day or putting an extra plate or dinner table on the dinner table, all these are just to acknowledge that we are in debt, or we acknowledge it's not even a debt, like we represent or we are in that lineage. That's why these rituals, though it may sound like it is like too much sometimes or like that, but it is in 1 year for certain days we are remembering our ancestors. And Yes. I feel those who do the rituals, that is also okay. But it is not like what I feel, that it's not like calling them here and then giving them food. It is for us that we are saying thank you. Yes, thank you. Yes, yes. And because what I understand is that they are very busy in their lives, whatever they are, and they have, and maybe I was the 10th ancestor there, and then I came back here. So that could be the Yes, same thing. It is yes, not that the yes, souls yes. repeat in the same lineage also. So it is nothing like that, and we are just thanking and we are acknowledging. So that's what I understand all these Pitripaksh rituals as. And Yes. I don't do it on a grand scale like being single, because but when I was in a family, then it was quite a thing. And Thank yeah. yeah, so even for my dadi, dadaji, and then one day, final day for everybody, like all ancestors. That was the ritual, and my mother parents did it very religiously. Yes, even at my home, my mom, and yeah, it is done for my dada dadi and for whoever they are very close, they do it. Now my for my father. So yeah. So and so that's why I feel it's quite important. The second thing is, if today is also Gandhi Jayanti, so Yes. I had so many memories and so many messages about Gandhi Jayanti also coming up. So we are not only the summation or uh, the some of our ancestors, but also the leaders of our era, or of at least Era. Yeah. 100 years back or 200 years back, whatever they thought, they experienced, and they shared with us, we gain from their sharing, from their leadership, and then we look forward. So there may be controversies that for how we got independence, or but as in general, to remember all the leaders who gave us this freedom, that that we have this democracy. So like 2 days back only, my nephew was talking about Lebanon. So in Lebanon, you can't even have food. There are countries Yeah. Yeah. where the Yeah. government Yeah. just falls. Yeah. Yeah. Then Yeah. we have this. Then I think that India has at least maintained this democratic structure for 70 years, Yes. and Yes. that is Yes. a big achievement. And of So course, that I don't know. It is very like now it is close to me because the kind of organization I work in. I want to share like today's experience yeah, and I share later on. But as this is a topic today for Pitripaksh, I also want to share something. I have a very little knowledge about why we do it and something like that. But from my childhood, I've seen so many like this particular 14-15 days till Amavasya. हमारे घर में अनियन नहीं बनेगा देन सर्टेन चीजें नहीं होंगी देन पूरा खाना लाइक फ्राइड बनेगा एंड देन क्रोज को हम ऐसे एंसेस्टर की तरह ट्रीट करते हैं आई डोंट नो व्हाई बट उनको बुलाते हैं और वो करते हैं तो वो मैंने देखा है बट जितना मैंने अभी थोड़ा सा सेंस में आई एंड देन जब से मैंने सुना है मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम किसी एक घर में बॉर्न हुए इट मींस देयर वाज अ कनेक्शन आई थिंक आपने मेरी मेरी लाइफ्स मेनी मास्टर्स बुक भी पढ़ी होगी और उसके पहले उससे भी रिलेटेड एक बुक है सो हम एक सोल ग्रुप में ट्रेवल करते हैं समवेयर आई थिंक वो सोल ग्रुप भले हम किसी भी फैमिली में आ रहे हैं बट अगर हम उसमें हैं तो वो हमारा एक सोल ग्रुप है तो मुझे ऐसे समवेयर दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील दैट दिस इज
our responsibility to feel grateful because of them we are here and we are having this sort of experience. So ये मुझे पितृपक्ष के बारे में लगता है. And somewhere जितना मैंने सदगुरु को सुना है एंड मतलब साइंटिफिकली तो आई कैन नॉट आंसर एनीथिंग कि व्हाई डू वी नीड टू डू दिस, व्हाई इतना ग्रैंड. बट मैं क्या करती हूँ, मैं जनरली रोज मेरे किचन के विंडो से कुछ चना या फिर कुछ समथिंग, मैं ये मेरी हमेशा से आदत है, मतलब ये 1-2 साल से है कि मैं जो बर्ड्स हैं हमारे यहाँ, पिजन बहुत होते हैं बॉम्बे में, ये तो आपने भी देखा होगा. तो क्रोज भी आते हैं और एक क्रो से तो ऐसा कनेक्शन हो गया था कि वो आएगा 7 बजे, उसको पता है कि मैं कुछ डालूंगी, मैं नहीं डालूंगी तब तक वो खूब आवाज लगाएगा, देन मैं डालूंगी फिर वो देख के चला जाएगा. तो मेरी जो मेड आती थी वो बोलती थी कि आपका इससे कोई कनेक्शन है, मैं हंसती भी थी. तो मुझे बस ये चीज लगता है कि आई थिंक मैं एनिमल से या बर्ड से उतना कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ, आई डोंट नो व्हाई, बट क्रोज से एक अलग कनेक्शन है. सो ये मुझे पितृपक्ष के लिए लगता है कि यस देयर इज समथिंग, आई थिंक जो कि हमें हमें ग्रेटफुल फील करने के लिए, जैसे हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, हर चीज सेलिब्रेट करते हैं, इट्स नॉट अ सेलिब्रेशन बट पेइंग आवर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स देम. Yes, and I would like, in the end, I would like to share this गांधी जयंती का, ये जो आप बात कर रहे हो ना अभी कि आज हमने क्या किया. I would like to share that experience with you, but later on, I don't want to divert from the topic. No, definitely. Actually, I also shared this in the beginning, though nobody was there. That हमारे घर में हम लोग क्रो को देते हैं, कुत्ते को देते हैं, इंसेक्ट्स को देते हैं, और डॉग को देते हैं, और नेचुरली कोई ब्राह्मण या कोई जो भिखारी, मतलब जिसको खाने का नहीं है और नहीं होगा, तो देन वी ऑल्सो गिव ड्राई like flour and rice to the temple. So it has two meaning, like so that at least we are giving certain part of our income, our harvest, to somebody else. That is one, and acknowledging our ancestors. That is of course there. तो डेफिनेटली. और क्रो के साथ मैं मतलब हम लोग बचपन में ना ढूंढने जाते थे क्रो के लिए, ऐसे खाना लेके जाते थे, गाय के लिए खाना लेके जाते थे, तो वो रिलेशन सा तो बन ही जाता है गाय के साथ, क्रो के साथ, और वो आ जाता है मन में कि नहीं, ये मतलब हमारे, मतलब ऐसे नहीं है कि ये सिंपल बर्ड्स हैं, लाइक देयर इज एन कनेक्शन, इमोशनल कनेक्ट बनता है उनके साथ, गाय के साथ, क्रो के साथ. और मैंने अभी देखा श्राद्ध में, मैं अभी यही ढूंढने लगी थी कि मैं लाती हूँ. मैंने ना मैं इसमें फोटो में बता देती हूँ. मेरे पापा का जिस दिन श्राद्ध था उसके 1 दिन पहले और 2 दिन पहले एक है ना पिजन, मैं इसमें भी दिखा देती हूँ. पिजन एक पैर में खड़े होकर मेरी बालकनी में काफी देर तक खड़ा रहा. कैन यू इमेजिन कि क्रो पिजन जो है वो कितना एक पैर पे खड़ा हो सकता है. पर एंड दिस इज द थिंग, मैं बाद में लगा दूंगी. I can see just a figure, blur दिख रहा है थोड़ा. ब्लर दिख रहा है, मैं शेयर कर दूंगी अभी थोड़ी देर में व्हाट्सएप को करके. और तब मेरे को याद आया कि मेरे पापा भी ऐसे ही करते थे, एक पैर, मतलब जैसे कहीं खड़ा होना हो, एक पैर मतलब पे, कई लोग को आदत होती है ना दूसरा पैर पे ज्यादा प्रेशर नहीं देते, तो उस तरह से एकदम से मेरे को उनको देख के ना, मतलब याद आया. एंड दैट पिजन, and that pigeon did that 2-3 times till I noticed it, till I took pictures of it, and then और फिर तब से कोई पिजन वैसा एक पैर में नहीं आया. So that is my connection. And और गाय के लिए पहले मैं बहुत डरती थी गाय को खाना देने के लिए, बट जब ये हर साल ये मतलब देने के हुआ, तब थोड़ा डर कम हो गया गाय को देने में. Yes. So is it something you want to share about Pitripaksh both? Otherwise then we'll go for personal or something, हंसी मजाक or something. Anything about Pitripaksh? नहीं, मुझे तो 2 ही पक्ष पता थे, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष चंद्रमा का. ये पितृपक्ष तो कुछ नया है मेरे लिए, तो इसमें तो आपको मुझे एनलाइटन करना होगा. व्हाट इज पितृपक्ष? हाँ, तो ऐसा है कि मैं जब वीडियो डालूंगी ना, आप थोड़ा सा देख लीजिए. हर ट्रेडिशन में कुछ ना कुछ है.
और स्वाति ने भी ठीक बात कही कि हम तो एंसेस्टर्स के लिए एवरी डे वी कैन बी थैंकफुल. इट्स नॉट दैट वन फोर्टनाइट दैट वी बी थैंकफुल. और चिड़िया को खाना देते हैं, क्रो को खाना देते हैं, गाय को खाना देते हैं, कुत्ते को खाना देते हैं, ब्राह्मण को, और हम लोग मतलब भिखारी को भी देते थे, और हम लोग थोड़ा बहुत टेम्पल में भी दे के आते थे. हमारे घर में इस तरह से हम लोग करते थे. और मेरी मम्मी भी यही रिचुअल्स बोलती थी कि जिसको चाहिए उसको क्यों ना दें. उसको दे. तो हाँ, मेरी मम्मी पापा Actually, इस बात पे तो इंडियन काम भी प्रॉब्लम करते थे. है कोई लॉजिकली सोचता ही नहीं है. जो ट्रेडिशन चला आ रहा है उसी को चलाते नहीं, जाते हम लोग चलाते अपना जाते. मॉडिफाई कर सकते हैं उस सब को. एंड इट्स नॉट अबाउट देम. मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता इट्स अबाउट देम, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी पास्ड अवे. दे आर ऑन देयर ओन realms and on their journey, and we may have come after 4 or 5 generations, we may have reincarnated, who knows, but it is just to say yes, we stand. हमारे आपके एक्सपीरियंस के कारण हम यहाँ पर हैं और हम थैंकफुल हैं, क्योंकि ये क्या मतलब जो कंप्लीट श्राद्ध होते हैं उसको बोलते हैं या इट्स वन नाइट? हाँ सेम श्राद्ध ही है जो 15 पूरे 14 14 15. दिन? हाँ, पूरे 14. हाँ ओके, तो बेसिकली कृष्ण पक्ष है अश्विन मास का. वाह वाह वाह. Thank you for joining on the Pitri Paksh, and let me stop the recording. Thank you. Yes, thank you. वो ये आपका फॉर्मल वाला फेयरवेल है, इसके बाद